हाँ हाँ रेकॉर्ड नॉर्मल प्रिंट है बुझीगला हम्म यार बीआर दरकार हम्म PHP रे बीआर न लगेले लागी जियो ना Okay. PHP ର ନିଜର କିଛି ନାହିଁ HTML ଭିତରେ PHP स्क्रिप्टिंग टा पूरा ये सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ना ओहो ନିଜର କିଛି ୟୁନିକनेस ନାହିଁ PHP ର ପୁରା ମାନେ HTML ଭିତରେ PHP हम्म ରହିବ तापर हम आसीबा वेरिएबल तो PHP variable is declared with a dollar sign followed by the variable name. Okay, some important points to know about variable is what a PHP is a loosely typed language, so we do not need to declare the data type of the variable. It automatically analyze the value and make the conversion to its correct data type. After declaring a variable, it can be reused throughout the code. Assignment operator is used to assign a value to a variable. The assignment operator में use करियो तो value टाको assign करियो variable. So first of all, हमें dollar sign use करियो for defining a variable. Dollar variable name then value. Okay, तो variable define ही साला परे तापर हमें data type बनेवा. कौन-कौन data type अच्छी कोटे उसी integer are stored the whole number without decimal point like 4195. Double or floating point number. Boolean have only two possible value, either true or false. Null is a special type that only has one value to null. String are the sequence of character like PHP support the string operation. Okay, तो हमारा different type अच्छी माने array अच्छी object अच्छी resources अच्छी तो integer is called the whole number. Double हेले हमारा fractional value store होगा boolean हेले yes and no. Null हेले जब हमें किसी value pass न करिए null रहिवो. String are the sequence of character like PHP support the string operation. array हेले हमें multiple value गोटे जगह store करिवा. Okay, तो अभी हमें देखिवा PHP गोटे मिनट सो एबे हमें देखिवा हमें को डाटा टाइप हमें यूज करिवा स्ट्रिंग रहला यार गोटे जिनस यार ऑटोमेटिक देखाएनी कौन कहला एंड पॉइंट टा माने देखिए विजुअल स्टूडियो कोड रे लिखला माने माने धर लिखले किछ गोटे तार एंड पार्ट टा से ऑटोमेटिक प्रिंट कर दो आपन हम आदरे लिखियो नहीं पड़े कि हेलो PHP $y equals to
hello Java, semicolon. Okay. Echo $x. ଏବେ hello PHP and hello Java. Okay. এটা হচ্ছে আমার string type. ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଉ ପଠେଇଛି କରେଇଦବ ଏଇ ଯୋଉ ଆର କାହା କହିଲେ ଯୋଉ HTML ଏବେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଗୋଟେ PHP ରେ ଆମେ ଆର ଲେନ୍ଥ ବି ପାଇବା strlen पास करिवा hello world. Okay, hello world आर लेंथ से शो करियो जे 11 तापर नेक्स्ट हो जे तो करला ओके एटा गोटे हमर डिफरेंस लेख डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट अभी तो डिफरेंस कोन देखो इको इज ए स्टेटमेंट फर्स्ट हेडिंग द echo is a statement which is used to display the output then output echo can be used with or without parentheses
parenthesis. echo doesn't return any value. Okay. We can pass multiple string. We can pass multiple string separated by Multiple string. separated by multiple string separated by Separate comma comma. in echo statement. Echo is a faster than the print statement. Faster than the print statement. Hmm. तापर लिख नेक्स्ट होची एटा इक्वल्स लिखि देला तो तापर प्रिंट लिख आगे. print is also statement used Use also statement which is used an alternative to echo so at many time to display the output. you can display the output. Hmm.
Print can be used with or without parentheses. Print always return an integer value. Print always return an integer value which is 1. integer value Which is 1. Using print, we cannot pass multiple arguments. Using print, we cannot pass multiple arguments. I guess so. Print is slower than echo statement. So outer sentence टा कहले Print is slower than echo statement. print is load Slower. देखला एटा हला हमरा डिफरेंस टा ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम तुमको डाटा टाइप विषय पढ़ेबे होला हाँ। ठीक है चलो